Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope that you all are fine. Today is 10th of June 2021. This is class 11th subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. In the last class we read about the concept and meaning of social stratification, wherein you have learned that social stratification is, we can say, division of society into different segments, into different groups, where in some groups are considered as superior or some groups are considered as inferior, or simply we can say social stratification is division of society into higher into ranks of higher and lower social units. Now there are some characteristics or features of social stratification. First is it is social. Stratification is social in the sense that it does not represent inequality which are biologically based. It is true that factors such as strength, intelligence, age, sex can often serve as the basis on which status are distinguished. But such differences by themselves are not sufficient to explain why some statuses receive more power, property, and prestige than others. The first thing is that social stratification is not a natural phenomena. It is a social, we can say, phenomena, because society is divided into different units, into different segments on the basis of the accepted socially accepted, we can say, valuations, socially accepted criteria. It is not a natural division. For example, we have natural differences like age differences. There is sex difference. There is we can say intelligence difference. There is strength differs from person to person. But these differences are natural. Although we can say these differences may serve a basis, these differences may play a role while the society is divided into different units or different segments, and when the different units are given ranks, some are given higher ranks, some are given lower ranks. But somehow when we talk in totality, these differences are not responsible, or we can say these differences are not responsible for the social inequalities, and they do not naturally, we can say, best to people or individuals with that power, with that we can say these status, with that position, with that prestige that they enjoy in the society. So we can say actually this stratification, division of society, is a social phenomena. It is the individuals, it is the society that uh, divides the society into different groups and then assigns different status, different position, different prestige to different groups. Some are given higher ranks, some are given lower ranks, some are considered as superior, some are considered as inferior. For example, we can say we have educated class and uneducated class. So educated class is considered as intelligent, though this is a natural difference, that intelligence is a natural difference. But that this educated class is enjoys a higher rank, enjoys much respect than the uneducated class. This inequality is social. So this is social inequality because the society has created this inequality between these two groups. Similarly, we can talk about other different social units or segments. So in simple words we can say social stratification is a social phenomena. कहने का मतलब है कि जो समाज के अंदर ये जो स्ट्रेटिफिकेशन, ये जो तकसीम की जाती है, तो ये एक नेचुरल थिंग नहीं, ये एक सोशल फिनोमेना है। क्योंकि समाज को, माशरे को मुख्तलिफ ग्रोहों में, मुख्तलिफ सेगमेंट्स में तकसीम जो करते हैं वो समाज के लोग ही करते हैं, उस बुनियाद पर कि किस ग्रोह को, किस जमात को हायर रैंक दी जाएगी, किसको लोअर रैंक दी जाएगी, और किन को ज़्यादा स्टेटस मिलेगा, हैसियत मिलेगी, किन को ज़्यादा पोजीशन मिलेगा यहाँ पे, किन को ज़्यादा प्रेस्टीज
इज्जत या जो बाकी विकार मिलेगा, तो ये सब चीज़ें वो समाज ही डिसाइड करता है। तो हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज social, it is social phenomena. Next is it is ancient. The stratification system is very old. Stratification was present even in the small wandering bands. Age and sex were the main criteria of stratification. Difference between the rich and poor, powerful and humble, free men and slaves was there in almost all the ancient civilizations. Ever since the time of Plato and Kautilya, social philosophers have been deeply concerned with economic, social, and political inequalities. So, second important characteristic is that it is ancient. Social stratification has been prevalent in every society, from primitive society to this modern industrial and this urbanized or industrialized society. This type and this stratification or social stratification is present in every society, though there may be some we can say difference in or in degree, or we can say there may be in some societies this division may be, this stratification may be complex, and in some societies this division may be simple. For example, if we talk about the primitive societies, the we can say that agrarian societies, we can we of the tribal societies, this social stratification was also present there. For example, they had men and women. Men were supposed to do one type of work, some women were supposed to do one type of work. Similarly, they had their own religion, these heads. In agrarian society, they had their own heads who had authority over different issues or different, we can say, these institutions. There were religious heads, there were, for example, people who had their authority on, as political heads. So this stratification was also present there. In simple words, we can say social stratification has been present in every type of society. So it is as ancient as the society itself. जो ये हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो समाज के जो अंदर जो तकसीम कारी है, ये मुख्तलिफ ग्रोहों में जो समाज को तकसीम किया जाता है, तो ये पहले से ही, शुरुआत से ही, जब से सोसाइटी समाज वजूद में आया, तो हर समाज में, हर माशरे में ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये तकसीम पाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन टॉक अबाउट दीज एंशेंट सोसाइटीज़ लाइक देयर वर रिच एंड पुअर, देयर वर पावरफुल एंड हम्बल. कोई अमीर कोई गरीब था. इसी तरह इन दोनों में तजाद पाया जाता था, इन दोनों को अलग अलग पोजीशन, स्टेट्स, इन दोनों को अलग अलग प्रेस्टीज मिलती थी. इसी तरह फ्री मैन एंड स्लेव्स, कोई गुलाम था कोई आज़ाद था. तो इस तरह की जो इसी तरह हम मुख्तलिफ तरह की जो एग्जांपल, जो मिसाल ले सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि सिंपली कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज की जो तकसीम है मुख्तलिफ ग्रोहों में, तो ये हर एक दौर में, हर एक ज़माने में, हर एक समाज के अंदर पाई जाती है. Next is it is universal. Social stratification is universal. Difference between rich and poor, the haves or have-nots, is evident everywhere. Even in the non-literate societies, stratification is very much present. This is also one of the important characters, that it is universal. You can find it in every society. For example, in industrialized society, it is universal. There are rich and poor in every society. Similarly, there are illiterate and educated in every society. There are haves and have-nots in every society. So this type of stratification, or we can say every society is stratified. There are different types of social groups who enjoy different rights, who enjoy different powers, who enjoy different and the status. Some groups are considered higher, some are considered as lower, some are given much importance, some are given low importance, some are considered as superior, some are considered as inferior. तो ये जो समाजी जो तकसीम कारी है, यूनिवर्सल है, आलमगीर है, जो हर जगह पाई जाती है. आप गरीब और अमीर के दरमियान फ़र्क आप हर जगह दुनिया के अंदर पाओगे. इसी तरह जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है, ये तकसीम कारी भी आप हर जगह पाओगे. एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, अनपढ़ तबका और जो तालीम याफ्ता तबका है, ये भी आप हर जगह पाओगे. नेक्स्ट इज इट इज़ इन डाइवर्स फॉर्म्स.
Social stratification has never been uniform in all societies. The ancient Roman society was stratified into two state strata, the patricians and the plebeians. The Orient society was divided into four varnas, the Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, and the Shudras. The ancient Greek society into freemen and slaves. The ancient Chinese society into mandarins, merchants, farmers, and soldiers. Class and state seem to be general forms of stratification found in the modern world. Now, next point is that this social stratification is not similar in every society. We can say it has diverse forms. It has been prevalent in diverse forms. For example, if we talk about Orient society, it was divided into four varnas. We can say, for example, we have Brahmanas, we had Shudras, we had Kshatriyas, we had these Vaishyas. So these were four, we can say, varnas of this Hindu society, and every varna had its own role. For example, the Brahmins were supposed to do the religious preaching. Similarly, the Vaishyas were known to supposed to do this, and they were considered as warriors. Sorry, Vaishyas were considered as these tradesmen. They were supposed to trade, to do business, and similar. And we can say the Kshatriyas were considered as warriors, soldiers, and those of the Shudras were supposed to do the menial jobs, scavenging. They were supposed to do those types of workers which were considered mean. So, similarly, in ancient society, we had free men and slaves. Some were free and some were slaves. Similarly, we can say in ancient Chinese society, there were merchants, there were farmers, there were soldiers, there were mandarins. So, this type of stratification had diverse, we can say, context in every society. They had their own type of strata, they had their own type of social stratification patterns. So though this social stratification is present everywhere, it has been prevalent in every society, in every time, at every age, but every society has its own patterns of social stratification. जैसे आज के दौर में हम देखते हैं कि हर समाज के अंदर जो स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, लेकिन ये उस समाज के मुताबिक हर समाज में ये एक अलग अलग तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन की जाती थी. फॉर एग्जांपल, अगर हम हिंदू सोसाइटी की एंशंट में बात करें तो यहाँ पर 4 वर्नास पाए जाते थे. शूद्रास, ब्राह्मणस, इसी तरह फिर दूसरे लेवल पर आते थे, दूसरे रैंक पर आते थे क्षत्रियास, तीसरे रैंक पे आते थे वैश्यास, और आखिर में जो रैंक पे आते थे वो शूद्रास. इसी तरह यूनानी जो समाज था उसके अंदर फ्री मैन एंड स्लेव्स, जो आज़ाद लोग थे और जो गुलाम थे, जो जिनसे मतलब जो स्लेवरी या गुलामी में उनको लिया जाता था वो. इसी तरह जो चाइनीज़ सोसाइटी में मर्चेंट्स थे, जो ताजर थे, वहाँ पर दूसरा क्लास था फार्मर्स का, किसानों का, और इसी तरह एक अलग क्लास था सोल्जर्स का. तो ये हर तरीके से हर समाज के अंदर मुख्तलिफ अंदाज से उनके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, उनके अपने अपने तरीके से जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन या समाजी तकसीमकारी होती है. क्लास एंड स्टेट सीम्स टू बी द जनरल फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन फाउंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड. अगर आप आज की दुनिया पे नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर आपको देखेगा कि यहाँ पर जो खासकर जो दो तरह के जो ये हम कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है. एक तो फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अक्सर आप क्योंकि अब लोग पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी लेवल हाई है, तो यहाँ पर जो और हमारा जो समाज है कम्प्लेक्स है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुख्तलिफ़ तरह के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग ज़बानों के लोग, तो हर तरह के जो उनका अलग अलग कल्चर है वो एक जगह रहने लगे. तो यहाँ पर जो ख़ास कर जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो एजुकेशन की बुनियाद पर या प्रोफेशन की बुनियाद पर या पैसे की बुनियाद पर स्ट्रेटिफिकेशन होती है. जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास इनकम लेवल के हिसाब से
अलग अलग स्ट्रेटिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल अपर क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो अपर क्लास में वो लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, फिर लोअर क्लास में वो लोग जो गरीब होते हैं। इसी तरह प्रोफेशन में कोई जो लेबर्स होते हैं जो मैनुअल वर्क करते हैं, और दूसरी तरफ से जो वाइट कॉलर जॉब्स होते हैं, जैसे मतलब जो मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो जो जिनको हाथ से, या हम कह सकते हैं मतलब जो जिस्मानी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है। तो इसी तरह एजुकेटेड क्लास में लिटरेट क्लास आता है, एक एजुकेटेड क्लास गैर तालीमी याफ्ता तबका, और एक एजुकेटेड क्लास तालीमी याफ्ता तबका। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बुनियाद है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की। हालांकि जो पहले ज़माने में वहाँ पर कास्ट भी था एक चीज़, जैसे कोई इंसान ब्राह्मण क्लास इस ख़ानदान में पैदा होता था तो वो बाई कास्ट बाई बर्थ उसकी कास्ट ब्राह्मण थी, उसको अपर कास्ट में लिया जाता था। लेकिन ये चीज़ें आप फ्री मैन एंड स्लेव, आज आप देखते हो कि स्लेवरी यहाँ पर ख़त्म हुई है दुनिया के अंदर, तो ये चीज़ें अब वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बुनियाद नहीं रही। तो आजकल सिर्फ कुछ ही चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। फर्स्ट है क्लास, वो किस स्टेटस से, किस क्लास से बिलोंग करता है, उसका रोज़गार क्या है, उसका पेशा क्या है, उसके पास कितनी दौलत है, उस हिसाब से वो कौन सा काम करता है, उस हिसाब से। इसी तरह वो तालीम याफ्ता है, गैर तालीम याफ्ता है। तो ये चीज़ें आजकल देखी जाती हैं। इस हिसाब से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आज मॉडर्न वर्ल्ड में हमारी इस सोसाइटी में किया जाता है। Next is it is consequential. The stratification system has its own consequences. The most important, most desired, and often the scarcest things in human life are distributed unequally because of stratification. The system leads to two kinds of consequences: life chances and lifestyle. Now it is consequential, which means that when social stratification takes place, it bestows some groups with much power, with much prestige, with much dignity, with much honor. On the other hand, that groups which are considered as of lower ranks, they enjoy less power, they enjoy less dignity, they enjoy less prestige, they enjoy less positions. So it is consequential. It means stratification has consequences. It bestows something to the different groups. So we can say, for example, most important, most desired, and often the scarcest things in human life are distributed unequally. अब यहाँ पर देख सकते हो आपके जो सबसे अहम जो चीज़ें होती है दुनिया के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल इकोनॉमिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। आप देख सकते हो कि दुनिया के अंदर कुछ परसेंटेज लोगों के जो सारी दुनिया की बाकी परसेंटेज, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कहा जाता है कि दुनिया का 1% जो पॉपुलेशन है अपर कास्ट का, जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत है, वो दुनिया के जो 99% लोग हैं, 50% जो दुनिया की वेल्थ है वो उस 1% के पास है, और 50% जो दुनिया की वेल्थ है वो 99% जो दुनिया की आबादी उसके पास है। अब आप देख सकते इसी तरह जो मतलब हुकूमती जो अमल होता है, पावर या गवर्नेंस, ये चीज़ें भी कुछ कुछ लोगों को फिर उनके हिस्से में आती है बाय स्ट्रेटिफिकेशन। या हम कह सकते हैं जो हम फॉर एग्जांपल जो हर तरह के जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल गरीब के लिए यहाँ पर उतनी तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना मेडिकल फैसिलिटी उस तरह की होती है। अगर अमीर करोड़पति आदमी या अरबपति आदमी, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो कहीं जगह पर भी अपना इलाज करा सकता है, हाई फैसिलिटी, हाई जो बड़े बड़े मतलब मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड है, अब देख सकते हो कुछ लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं होता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अमीर लोग होते हैं, वो करोड़ों का ज़ाया करते हैं मतलब उस पर ऐसे कामों पर जो लैविश जो पार्टीज़ होती हैं, फंक्शंस होती हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ एक जमात है जिनको खाने को नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है जो ज़िंदगी के लिए बहुत अहम होती है। तो इस सेटिस्फेक्शन में ये चीज़ें आती हैं। एक तो आधों को अच्छा सा पोजीशन मिलता है, उनको अच्छी इज़्ज़त मिलती है, अच्छा रुतबा मिलता है। दूसरी तरफ लोगों को जो लोअर रैंक्स पे आते हैं उनको कम इज़्ज़त मिलती है। और दूसरी तरफ एक ख़ास बात यह है कि जो ऐसी चीज़ें जो ज़िंदगी गुजारने के लिए अहम है, वो भी उन गैर मसावी उनकी तकसीम होती है कि एक ग्रोह को वो ज़्यादा मिलता है और दूसरे को कम मिलता है।
The system leads to two kinds of consequences, लाइफ चांसेस एंड लाइफ स्टाइल। तो इसकी वजह से दो जो consequences खास कर आते हैं, फर्स्ट इज लाइफ चांसेस एंड सेकंड इज लाइफ स्टाइल। लाइफ चांसेस रेफर टू सच थिंग्स एज infant mortality, longevity, physical and mental illness, marital conflict, separation and divorce. So these are life chances. For example, you must have come across these things. For example, we can say in the lower ranks, the groups which are considered as lower rank or inferior in this status, for example the labor class, you can see there the infant mortality will be high, the longevity will be less, and the average age which we call as life expectancy or average lifespan, the physical, they may be physically and mentally weak. In contrast, when we know about the higher cost, upper castes, which have huge wealth, you can see their life expectancy will be high. They will be mentally and physically fit than those people who are at the lower ranks, who are at the lower this strata. Similarly, separation and divorce and the family issues, these will be more in the lower strata, the labor class, the not haves class. So we can say this type of consequence is because of this social stratification, because being this society divided into different segments. Next is lifestyles include the mode of housing, residential area, education, means of recreation, relation between parent and children, modes of convenience, and so on. Second consequence of this social stratification is, you can see the rich people have more facilities. They enjoy education. They can educate their children in the highly reputed institutes. They have means of recreation. They travel the world. Similarly, they have this much better facility, residential facility. They have big mansions. They have big buildings. They have luxurious life, we can say. Similarly, the connection between the parents and their children, the moods of convenience, they have different types of this communication. We can say, for example, when the parents and the children of the upper castes, or we can say this the rich people, or those groups who enjoy high prestige, who enjoy high status, who enjoy high position in the society, they have different types of this communication with their parents, and their relationship is of different nature. On the other hand, when we look at the lower strata, uh, this lower class, the people of this labor class or the illiterate class, you can see there is a difference in their convenience, there is a difference in their communication. So because they do not enjoy this type of facilities, this type of luxurious life, this type of recreation facilities, this type of medical facilities, so there is simply, we can say, a big difference between the standard of living of these people living in the upper class, or we can say the people belonging to the higher ranks, and between the people who belong to the lower strata, who belong to these lower ranks. So these consequences are basically, we can say, the result of this social stratification, because through social stratification, social inequalities crept in, because when we divide society into different groups, the social inequalities crept in. तो इसका कहने का मतलब है कि जब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, समाज मुख्तलिफ तबकों में बंट जाता है। एक जो तबका होता है, एक जो ग्रुप होता है, उसको ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है, उसको ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है, उसको ज़्यादा पावर मिलता है, उसको ज़्यादा जो समाज के अंदर रुतबा मिलता है। तो साथ साथ उससे ये नतीजा पर निकलता है कि उस ग्रुप या उस सेगमेंट के लोग जो अपर रैंक्स के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वेल्दी एंड रिच पीपल, उनका यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनका जो मतलब ज़िंदगी का तो जो तरीका है, उनका मयारी ज़िंदगी है, वो ज़्यादा बेहतर होता है बनस्बत जो लोग
लोअर स्ट्रेटा में आते हैं, जो लोग जो निचले तबके में जो लोग रहते हैं, तो उनके बरअक्स उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है। वहाँ पर आप बर्थ जो डेथ रेट भी कम देखोगे, उनकी जो सेहत है, जहनी जिस्मानी या जो जहनी सेहत है वो भी अच्छी होगी, क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलता है, उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है, उनको अच्छा केयर मिलता है। अब जो लोग गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़, इतनी सहूलत नहीं होती है, इस वजह से उनकी ज़िंदगी और इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो ये यहाँ पर हमने देखा जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थे। इसमें पहला जो हमने देखा कि फर्स्ट इज दिस social stratification is ancient. It is prevented from that, we can say, from the beginning of the this uh, life on earth, when people began to live in groups. So this type of this stratification has been prevented from there. Second is that this is universal. This is present everywhere. You can see it in Western world, in the underdeveloped countries, in the developed countries, in the we can say peasant societies. You can see it in the industrialized societies. So this is everywhere present. But next is that social stratification is somewhat different in different societies. Every society has its own pattern of stratification. For example, in Indian society, we have in the Hindu society, we have different varnas. So society is stratified. Society is divided into different segments. But when we see in the in this Chinese or Greek society, in Greek society we have these free men and slaves. In Chinese society we have this merchants, soldiers, mandarins. So every society has its own pattern of social stratification. And next is that this stratification is consequential. It has consequences on the life of the people of different groups, because when society is divided into groups, some are considered as higher rank, so they enjoy position, they enjoy much better facilities, they enjoy recreation facilities, they enjoy better education, better nutrition. So they are residential, and they enjoy better residential facilities. On the contrary, the lower strata, the people belonging to lower strata of the labor class, of the illiterate class, so of the have-nots class, they enjoy much lower this much less facilities regarding health, education, recreation, housing facilities, hygiene, sanitation. So there is a big difference, big gap between the standard of living of the upper this caste or the people who belong to the higher ranks, and the people who belong to the lower castes. तो ये सब इसका करेक्टरिस्टिक्स था, फीचर्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको किसी जगह यहाँ पर मुश्किलात या किसी जगह आपको कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है, तो मुझे आप कमेंट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपके सवालात का जो जवाब अच्छे तरीके से दूंगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।